what we need to make sure today is, if they don't understand, they ask the questions. I'm only here for one day. आप हिंदी में सवाल कर दें, ये जवाब दें। पूछ सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मेरे को पूछ सकते हैं या इनको कुछ पूछ सकते हैं, आपको बताएंगे। Okay. The membrane. SIKA Proof A. Okay. This TPO membrane. SIKA Proof membrane में ये TPO, ये PVC नहीं, ये TPO membrane. This is a fleece. ये fleece है. Okay. We always install it. Fleece up. हमेशा जब भी इंस्टॉल करेंगे, ये फेस ऊपर रहेगा. Okay. ये fleece ऊपर रहेगा. Very flexible. बहुत आसान है, flexible है, hard material नहीं. Okay. So be careful because it will puncture. ये इतना flexible है, इसमें पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो इसके साथ आप केयरफुल काम करें. ऐसा नहीं कि भाई कुछ छोड़ दिया, कीड़ा छोड़ दिया, नहीं चलेगा. Roll 2 meter wide. और 2 मीटर वाइड होता है आपका. By 20 meters. लेंथ में 20 मीटर होता है. Each roll has 4 overlap. हर रोल के अंदर ये तो आपको ओवरलैप का टेप लगा होगा. So we start. I'll show you how to do an overlap. Okay. We have the cleaning racks here. Okay, cleaning racks here. Okay. सामने आइए. We place. ओवरलैप for If you see, जितने में टेप लग रहा है. this minimum, this maximum. ओवरलैप जब करेंगे, फर्स्ट लाइन जो है मिनिमम आपको इतना ब्लैक लाइन फर्स्ट पे करना है, मैक्सिमम सेकंड लाइन. इससे आगे आप नहीं जाएंगे या इसके पीछे नहीं जाने. आपको ये 2 लाइन तक करना है. So what you can do, इसके सेंटर में लगा. center, same. पहले लाइन देखें, ऐसे नहीं कि टेप निकाल दिया फिर उसके बाद लगा रहे हैं. But always before, we need to make sure clean. Yeah, this is dirty, so always make sure that we remove. हमेशा मेम्ब्रेन क्लीन करना चाहिए. आप जब ओवरलैप लगा रहे हैं, जब जॉइंट लगा रहे हैं, So what? उसको 2 तरफ से क्लीन करना है. Yeah. So what do we do first? Pull the tape, so we get it like this, लगा दिया यहाँ पे. and you place. Okay. All we do then is hand, आपने टाइट कर दिया ताकि ये मूव ना हो. and now I can. So now I place. तो फिर आपने अलाइनमेंट कर लिया बराबर से. Hand. Watch this. Pull 90 degrees. ऐसे पीछे नहीं खींचना है, साइड में खींचना है. टेप को हमेशा साइड में खींचना है. And what I do then is just literally. सिर्फ हाथ से आप ऐसे करें. रूलर से बाद में करेंगे, पहले हाथ से दबाना है. Okay. And then I can check again. यहाँ पे देखना है फिर अलाइनमेंट बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो देखना है आपको. वहाँ तक लाएं. ये हो गया आपको. Okay. इतना आसान है. इसमें किसी को सवाल है? जी. उसके बाद रोलर लाएंगे. Make it easy for yourself. Is make sure everything is nice and square. Okay? आपको स्क्वायर बनाना है, ऐसा नहीं कि आड़ा टेढ़ा जैसा पीवीसी में बनाते वैसे नहीं. इसमें आपको एग्जैक्टली रेक्टेंगल चाहिए. इसमें टेप का वो ये है ना, पीवीसी में तो मीटर से वेल्ड करते हैं ना. हाँ. तो इसलिए इसमें वेल्डिंग नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है.
Now, we now can cut this back nice and square. But now I need a piece to finish, to go on top. So, if this piece is .410 wide, .475 long, how big does it need to be? कितना बड़ा पीस चाहिए अगर ये इतना साइज होगा तो? इसमें 5 सेंटी, इसमें 5 सेंटी, 10 सेंटी से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो ये टेप कितना है आपका? Don't forget, it needs to be 5 सेंटी। 5. 5. तो यहाँ पे आएगा 415 और यहाँ पे आएगा 480। 5. Yeah? So, measure. मेजर करें आप। कितना लगाएंगे? तो कितना आएगा? नंबर लिखे वहाँ कितना आएगा? 415 लिखो। 415 उधर आएगा या इधर आएगा? 480 आएगा वहाँ, 415 इधर आएगा। Is that right? 480? 450. 10 centimeters. It's 5. So 10 centimeters. अगर आप 415 लेंगे तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। If your maths or your not that good, just do. Yeah? It's almost the size of this ruler, actually. Okay, so now that piece needs to be cut. Somebody needs to cut me a piece of membrane, which is 525. Yeah? By how much? Do we have a tape measure there? By 5. Okay. Cut a square. Have somebody watching, especially vertical transitions, because it's where here it's hard because nobody can pick up 6 meters of steel, especially when you're on a 2 meter raft. It's going to be 45 gauge, be very heavy. It's normally on the vertical areas where they just slide it in, put a protection board, put a cartonite board there, or even plywood as a protection while they're placing. It will save you, and just edge it along. Now we need to replicate internal and external tapes. Whatever we did here, we need to do here. So this is why I say it gets very time consuming. So internal tapes. We need to cut. Yep, I'll just show you. Where's my knife? Who stole the knife? Here it is. One. Two. Now, we need to place these in. One. He's a very strong man, he's lifted the whole basement up. And this is where it gets complicated, because if they try to make this too small, they cannot get their arms and their hands in. So sometimes they actually make them half a meter bigger, so they can actually work. Then what it is time. So here again. इसी में ऊपर से करते हैं, इसमें ऊपर नीचे दोनों से होगा। पता है? पीवीसी नीचे है। Okay. इसमें ताज Install. बड़ा बनाना। So now, what's the first thing we need to do?
I need to remove this tape, this back one. So the best thing here is push, let drop. Same. Okay, but I need to make sure I remove this piece. So, put my hand up underneath. Someone stood on the end of the tape, so okay, tomorrow. I'd show them, I don't mind if it even creases, to show them that it's watertight still. Don't worry. This is because it's old, this is why we don't use old material. And now push. Clean. Okay, same. You underneath. दो आदमी आए वो छोड़ दे पीस पहले नीचे का टेप लगा खाली अंदर वाला निकालना है ऊपर वाला नहीं नीचे वाला पहले नीचे वाला लगाएंगे ये लगा दें पहले ये लगा दीजिए just to there. Now stop. Now do this one. This is why always have a box. Where's our bin? Rubbish. Always keep the site clean. Be mindful. You can do it here now, but in the side you cannot lift the membrane like this. This one side. That's it. Keep pulling. Wait. Alignment. Yeah, that one doesn't matter. The one underneath doesn't matter yet because he's working on this one. So he's working on the left. First this one, this one. Okay, now keep pulling. That's it. इसको निकालें. Doesn't matter. That doesn't. That's it. Good. Roller. Now, what have you got to do again? End. No. This end. This ends. This end. Same like this. Only the ends. Okay. What I want each team to cut 50 by 50 space on theirs. इसमें काटें. And same. एक टीम उधर हो जाइए इसमें हाफ मीटर 50 का ऐसे ही करना है Cut complete line. That's okay. You should cut on the other side, not this side. Good. That's it. Now cover that piece with your. Now cover it. That's it. Good. Now do the other two. दूसरे दो लगाएं. आप. Sorry, माफ करना. आप इधर लगाएं इधर लगाएं. Well done. Yeah. Like I said, the tape is heat and pressure sensitive. At the moment, all he's doing is helping it release. So it's easier to put your hand up and pull it away. मैं समझा तुमने कोई नया कारनामा He कर wouldn't दिया be able to अंसारी भाई. leave that on site because dust would get in and kill it. But just for installation, ideal. Good thinking. As I said, this is why it's time consuming. खींचो रंजीत खींचना हाथ डाल के. It's better than repair. हाँ इसको खींचो. Yes. या अरे भाई तुम्हें शाबाशी दे रहे हैं वो. अंसारी भाई तुम तो छा गए. You're not that strong.
Leave. You can't touch that. Leave. Too late. Doesn't matter. We show you that it's not a problem. Not a problem. प्रॉब्लम नहीं है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ you can pull it here, but in the side you cannot lift the raft. Yes. तो ऐसे निकालो जैसे चूहा पकड़ ले. हाँ. खींच रंजीत. हाँ शाबाश. हाँ. मत बोलिए टेक्निकल मैनेजर को पास भेजना है मुझे. आप लोग खड़े हैं, ये रोलर. No, I can still see 2 pieces, 4 pieces that need doing. What's missing? What needs to be moved? Corner. This is the biggest single mistake made. They forget to do the second side. Good. Good. Now Good, stop. good. Stop. Sit. Correct. You finish one side because you cannot work 2 at a time. One by one. Finish one side, then go other side. Because you will have a clash of Good. hands. Good. 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 Very good. Well done, young man. Good. Very old. हाँ. खींच अंसारी भाई. One more. One more. 1 minute, 1 minute. पूरा कंप्लीट कर चल. पहले एक साइड कंप्लीट. बाकी है. क्या कर? वो छोड़ दें अंसारी भाई. प्लास्टिक निकालना है ना, नीचे से काट के निकालना. काट नहीं नीचे से. Just hold it. Then you can easily pull it out. Make a complete line so it is easy to pull out. Good.